Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. So our first word for today is haphazardly. Haphazardly means in a manner that is lacking any order in organization. यानी कि जो बहुत बड़ा तरीके से disorganized तरीके से या disoriented तरीके से हो पड़ी हो कोई चीज यहाँ पे रास्ता होता हम कह देते हैं कि एक haphazard बातें या फिर haphazardly चीज पड़ी हुई है. For example, he threw his clothes haphazardly into the suitcase, not caring if they were wrinkled or folded properly. मतलब जैसे अगर आप सूटकेस को स्टफ कर देते हैं कपड़ों से तो इसका मतलब है कि आपने बहुत haphazardly कपड़े जो है ना भरे, आपने किसी भी उसके चीज का ध्यान नहीं रखा. ये एक एग्जांपल है जैसे टेबल के ऊपर किताबें और लैंप और सारी चीजें जो है बहुत बड़े haphazard मैनर में पड़ी हुई हैं. Synonyms are, for example, randomly, chaotically, carelessly, disorganized, irregularly, unsystematically. Antonyms: deliberately, methodically, carefully, systemically, orderly, intentionally. Harmony refers to the pleasant combination of the different elements such as sounds or colors that creates a sense of unity and balance. तो harmony में आप unity और balance के sense में लेते हैं. इसके अगर मैं example की बात करूँ तो for example, the perfect carbonated voices blending together and seamlessly. Harmony कोई भी चीज हो सकती है लेकिन उसकी जो शर्त है ना वो ये होनी चाहिए कि वो जो चीज है वो बहुत परफेक्ट मैनर में. ठीक है. इसी तरह अगर मैं further move करूँ तो इसके कुछ synonyms हैं जैसे कि agreement, accord, unity इसका बहुत important synonym है आपने याद रखना है, concord, coherence, consonance वगैरह. इसी तरह अगर मैं antonyms की बात करूँ तो it's discord, disharmony, cacophony, dissonance, incompatibility, inconsistency. जिसको consistency नहीं होगी उसको आप इसमें fall करा देंगे. Haughty means having or showing arrogant superiority. ठीक है. जैसे for example, she had a haughty expression on her face as if she thought she was better than everyone else. यानी कि अगर आपको अपना बहुत arrogant behavior दिखा रहे हैं ना तो जो भी बंदा दिखा रहा है तो हम कहते हैं that person is haughty. Haughty means इसके कुछ synonyms हैं जैसे for example arrogant, proud, snobbish, conceited, pompous या फिर superior. और इसके कुछ antonyms हैं for example humble, modest, meek, unassuming, unpretentious या फिर differential. Next word is havoc. Havoc means great destruction or devastation usually caused by the natural disasters, war or violence. इसके कुछ examples हैं for example hurricane wreaked havoc on the small coastal town causing extensive damage to the homes and business. तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा destruction या तबाही cause कर रही है तो हम उसके लिए havoc का word use करते हैं. इसके कुछ synonyms हैं for example destruction, devastation, chaos, mayhem, turmoil, carnage. और antonyms हैं कुछ for example order, calm, peace, harmony, stability या tranquility. See the next word, hearsay. Hearsay refers to the information that is heard from someone else rather than directly experienced or witnessed. कुछ चीजें होती हैं जो या कुछ लोग होते हैं जो सुनी बात को आगे पहुंचा देते हैं या फिर कानों में जो भी बात पड़ी उसको आगे पहुंचा देते हैं, उसके लिए हम hearsay का word use करते हैं. इसकी example है the judge did not consider the testimony of the witness as it was based on hearsay and lacked any concrete evidence. ठीक है, सुनी बात थी, कोई concrete evidence नहीं था, इसलिए judge ने उसको accept नहीं किया. इसके कुछ synonyms हैं for example gossip, rumor, speculation, hearsay, evidence, subtle but word of mouth. Antonyms की मैं बात करूँ तो it's evidence, proof, first hand, direct, substantiated या confirmed. Next word is intended. Intended means something that is planned or meant to happen. यानी कि किसी चीज की अगर आपने पहले planning की हुई है तो उसके लिए हम intend का word use करेंगे. आपका इरादा है किसी चीज का. She intended to finish her homework before watching TV. मतलब उसका इरादा था कि वो पहले अपना स्कूल का काम खत्म कर ले और उसके बाद फिर वो टीवी देखे. तो कोई चीज जिसके बारे में आपने प्लान किया हुआ है या जो आपने सोचा हुआ है कि it's gonna happen this day, तो उसके लिए हम intended का word use करते हैं. कुछ synonyms हैं for example planned, intended, deliberate, premeditated, purposeful and calculated. इसके कुछ antonyms हैं for example accidental, unintentional, unplanned, involuntary and incidental.
Next word is in vain. In vain means without success or without achieving the desired results. इसके example है despite her best efforts, her attempt to persuade her friend to come with her to the party were in vain. ठीक है, तो मतलब बेकार, फजूल, जिनका कोई फायदा ना हो। ठीक है, इसके कुछ synonyms है, for example, unsuccessfully, fruitlessly, ineffectively, unproductively, futile या pointlessly. Antonyms में successfully, effectively, productively, efficiently, usefully या फिर purposefully. So this is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी words हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.